Hello my dear students, welcome back in our today's class, and today we are in the last class of this chapter, that is metallurgy. Okay, so before moving to our today's topics, let's revise what we have learned in our last class. Okay, so in our last class we have learned about what extraction of aluminium. Yes, so you all know that aluminium is a reactive metal. Yes, and the aluminium being reactive metal, what happened? It does not occur in the nature in free state. Okay, yes. Then aluminium is a third highly abundant element in the earth crust after what? Oxygen and silicon. Okay, yes. So there are two steps in the extraction of aluminium. तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होने के लिए दो स्टेप्स हैं विच इज़ वेरी नेसेसरी. सो फर्स्ट इज व्हाट? concentration of bauxite ore. So here in this we have learned about so many reactions. Okay, and the bauxite is consist of what? Main, it is a main ore of aluminium. ठीक है, yes. And silica, ferric oxide and titanium oxide, these are the impurities which are present in what? Bauxite. Okay, and the separation of these impurities is done by which process? Either by leaching process or by Bayer's method or Hall's method. Yes, so this in detail we have learned in our last class. So this is the first step of concentration of bauxite ore. Then the second is what? Electrolytic reduction of alumina. Okay, so in the electrolytic reduction of alumina, okay, this method of electrolysis of molten mixture of alumina which having what? Melting point which is greater than 2000 degrees Celsius is done in a steel tank. Okay, yes. And this steel tank has what? Graphite lining. Here you can see, yes, on the inner side. Okay, and this lining does the work of what? Cathode. And a set of graphite rods which is dipped in a molten electrolyte works as what? Anode. Yes, so this also we have learned in our last class. Then the B part we have learned about extraction of moderately reactive metals. ठीक है, yes. So here what happens? The metals in the middle of the reactivity series such as what? Iron, zinc, copper, they are called as which metal? Moderately reactive metal. Yes, and they usually occur in the form of what? Their sulfide, salts or carbonate. Okay, yes. So it is easier to obtain the metals from their oxides rather than sulfides or carbonates. Therefore what happened? The sulfide ores which are strongly heated in the air to transform them into oxide, and this is called as what? This is called as roasting. Yes, and what about calcination? The carbonate ores are strongly heated in a limited supply of air to transform them into oxide is called as calcination. And the C part we have learned about extraction of less reactive metals. Okay, which are found, they are found in a free state in nature. Okay, for example what? Gold, silver, platinum. Yes, and then the third part is refining of metal. About this we have learned. So today we are going to learn a very simple topic which you have already learned, that is what? Corrosion of metal. So what is the meaning of corrosion? Okay, so what is the meaning of corrosion? Let's see. So due to the various components of atmosphere, oxidation of metals takes place. Okay, which consequently resulting in their damage. Because of oxidation क्या होता है? मेटल का मेटल जो है वो क्या होता है? इट गेट्स कन्वर्ट इनटू लिटिल काइंड ऑफ डैमेजेस होता है उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज corrosion. Yes, so old iron bars of building, copper vessel not cleaned for a long time, then silver ornaments और idols. idols मतलब जो ऐसे statues रहते हैं. Yes, exposed to air, वो उनको क्या होता है? वो तो हमेशा एयर के साथ एक्सपोज हो जाते हैं बिकॉज वो ऐसे नीचे के इधर ग्राउंड में रहते हैं. Yes, so they are exposed to air for a long time. Old abandoned vehicles fit to be thrown away.
ओके तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, ऐसे काइंड ऑफ सरफेस gets attached to them if they are exposed to the air for a longer time. Okay, yes. Then why do the silver articles turn blackish white, blackish white, while the copper vessels turn greenish on keeping in air for a longer time? Yes, so here you can see the rusting of iron articles. Rusting of iron articles causes large financial loss. Yes, obviously. Thus the corrosion of ions, that is rusting, it is a big it is what? It is a big problem. Yes, this is not a simple problem. This is a big problem. Okay, rusting जो हो जाता है. So, yes. आयन, ये वॉट हैपन, आयन जो है वो रिएक्ट हो जाता है. आयन रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर एंड अ डिपॉजिट ऑफ रेडिश सब्सटेंस दैट इज Fe2O3.XH2 इज फॉर्म्ड ऑन इट. ठीक है, एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज वॉट? रस्ट. हियर यू कैन सी द रेडिश कलर substance which is formed on the surface of the metal, so that is called as what? Rust. Okay, ये rust हो गया है. Yes, then the carbon dioxide in moist air react with the surface of copper vessel. Okay, copper loses its luster due to the formation of greenish layer of copper carbonate. Okay, यहाँ पे you can see the greenish layer which used to form and इसका luster जो है वो गया है. Yes, that is CuCO3 and that is called as what? Patination of copper. Copper का patination हुआ है and because of that which color gets formed? Greenish color gets formed. Yes. Then third point is there, on exposure to air silver articles turn blackish after some time. Here you can say this is a silver vessel is there. Yes, it turns blackish after some time. And this is because of what? The layer of silver sulfide, that is Ag2S, which is formed by the reaction of silver with hydrogen sulfide in air. ओके तो मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं वो एयर के साथ ही होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द मेटल गेट्स डैमेज. बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम अ थीन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन इट. ओके, यस. So what measures would we have to take to stop the corrosion of metallic articles? Okay, so here you can see the prevention of corrosion. Various methods are used to protect the metals from the corrosion. Yes, so what? The special attention is paid in almost all the methods so that iron does not rust. We can lower the rate of the process of rusting of iron. हम जो उसका प्रोसेस है उसको थोड़ा लोअर कर सकते हैं सो दैट इट विल नॉट गेट रस्ट. हाउ वी हैव टू डू दैट? ओके, लेट्स सी. Corrosion of metals can be stopped by keeping metals isolated from a direct contact with air. Okay, yes, air से contact ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? Yes. Then the prevention of corrosion can be achieved by various ways. Some of these methods, these are as follows. First, to fix a layer of some substance on the metal surface so that the contact of the metal with moisture and oxygen in the air is prevented and no reaction would occur between them. Okay, ऐसे substance का use करना है okay, जो reaction को stop कर सकते हैं metal का and air का. air के बीच में और metal के बीच में जो reaction होता है उसको स्टॉप करने वाला ऐसा एक सब्सटेंस लेंगे अगर तो क्या हो सकता है? रस्टिंग करोजन जो है वो रुक सकता है. ठीक है, यस. देन द सेकेंड इज टू प्रिवेंट करोजन ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट, ऑयल, ग्रेस और वार्निश ऑन द सरफेस. यस, अगर पेंट का यूज़ करेंगे, ऑयल का यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ये जो करोजन है वो रुक सकता है. फॉर एग्जाम्पल, corrosion of iron can be prevented. Corrosion of iron can be prevented by this method. आयन का corrosion जो है वो prevent हो सकता है by applying paint, oil. Okay, yes.
So students, can we permanently prevent the rusting of iron article by applying a layer of paint on this surface, on that surface? So we cannot protect the articles permanently from rusting by painting them. So we cannot do like this. The method of painting is suitable for a short time. This is only a short time thing. Okay, after that again we have to apply the things. If there is a scratch on the paint on the surface of the article, and if a small surface of metal comes in contact with air, the process of rusting starts below the layer of the paint. ठीक है, अगर एक ऐसा सरफेस है जिसको पेंट नहीं किया है, ओके, और क्या हो सकता है, वो जो पार्ट है वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, येस इट विल स्टार्ट रस्टिंग. ठीक है, येस, सो पेंट ज़रूरी है. करोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पुटिंग अ लेयर ऑफ नॉन corrodable metal on the corrodable metal, and this can be done in many ways. Okay, how this can be done in many ways, let's see. First is galvanizing. Galvanizing में क्या होता है, in this method a thin layer of zinc is applied to prevent the corrosion of iron or steel. Okay, for example shining iron nails, pins, etc. So in this method corrosion of zinc occurred first because zinc is more electropositive than iron. तो zinc और iron लेंगे तो इसमें से first corrosion किसका start होगा, zinc का. ठीक है, yes, because it is more electropositive than iron. Okay, then after a few rainy season the zinc layer goes away and the inner iron gets exposed. ठीक है, and then iron starts rusting. तो ऐसे जो ये जो है वो प्रोसेस होती है, जिंक लेयर कम्प्लीटली जाता है एंड द थिंग्स विच आर देयर इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड रस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो गैल्वनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, देयर इज सम प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजिंग. हियर यू कैन सी द कॉस्टिक क्लीनिंग, मतलब उसको किस में रखते हैं, मेटल को डिप्ड इन अ बेस. ठीक है, बेस में रखते हैं, उसको बेस में डिप्ट करते हैं. देन रिंजिंग, रिंजिंग मतलब क्या, क्लीन करेंगे. ओके, क्लीनिंग. देन पिकिंग, पिकिंग मीन्स वी हैव टू पुट दिस इन एसिड. ठीक है, क्या किस में पुट करना है, एसिड में. ठीक है, देन आफ्टर दैट ऑल्सो वी हैव टू रिंजिंग इट, दैट इज वी हैव टू क्लीन इट. ठीक है, देन फ्लक्स सॉल्यूशन, फ्लक्स सॉल्यूशन में क्या होता है, जनरली हीटिंग होता है मेटल का. ओके, येस, देन हीट के बाद क्या होगा, ड्राइंग, मेटल को ड्राई करेंगे, फिर उसको जिंक का बाथ देंगे. येस, जिंक का बाथ देंगे मेटल को, और आफ्टर दैट कूलिंग एंड देन इंस्पेक्शन. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजिंग. ठीक है, येस, इट इज़ वेरी इजी. देन द सेकेंड पार्ट इज टाइनिंग. टाइनिंग मतलब क्या, इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ मोल्टन टीन इज डिपॉजिटेड ऑन मेटल्स. टीन का जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है ऑन द surface of metals. So we call it as कलई, a greenish layer which is forms on the surface of copper or brass vessel. ठीक है, ग्रीन कलर का बहुत आप में से बहुत लोगों ने देखा भी, स्टूडेंट ने देखा भी होगा कि कैसे ग्रीनिश कलर फॉर्म हो जाता है. येस, दिस ग्रीनिश कलर इज़ वेरी पॉइजनस. If buttermilk or curry which is placed in such a vessel it gets spoiled. Okay, और ये जो ग्रीनिश कलर होता है that is poisonous. और अगर हम उसमें बटर मिल्क रखेंगे, करी रखेंगे, तो वो जो अंदर का है वो स्पॉइल हो जाएगा. करी, बटर मिल्क सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस आउटसाइड रस्टिंग एंड करोजन. सो टाइनिंग इज़ डन टू प्रिवेंट ऑल सच डैमेजेस. टाइनिंग जो है वो प्रिवेंट कर सकता है from all such damages. Yes. Then the third is anodization. Anodization means what? In this method, metal like copper, aluminum are coated with a thin and a strong layer of their oxides by means of electrolysis. For this the copper or aluminum article is used as anode. ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर्टिकल. सो इट इज़ यूज्ड एज व्हाट, एनोड. ओके, as this oxide layer is strong and uniform
all over the surface. It is very useful for the prevention of the corrosion of the metals. Yes. For example, aluminium. Yes. So when aluminium is anodized, okay, a thin layer of aluminium oxide is formed, and then what happened, it obstructs the contact of the aluminium with oxygen and water, and this prevents the further oxidation. And अगर oxidation ही नहीं होगा तो क्या होगा, corrosion भी नहीं होगा. Yes. So this protection can be further increased by making the oxide layer thicker during the anodization. थोड़ा सा ज़्यादा oxide layer को ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, during the anodization. यहाँ से power supply करेंगे, and here you can see the cathode, and here this is the anode. So anodization also very important method, and it is very easy. And the fourth is electroplating. Yes. So in this method what happens? A less reactive metal is coated on the more reactive metal by electrolysis. ठीक है? Yes. The silver plated spoon, gold plated ornaments are the examples of electroplating. तो gold plated जो ornaments हैं, silver plated spoons, these are the examples of what? Electroplating. Okay. Here you can see the cathode. कैथोड पे क्या है, एल्यूमिनियम स्पून है, एनोड पे क्या है, सिल्वर प्लेट है. यस. द फिफ्थ पॉइंट इज एलॉइंग. एलॉइंग मतलब क्या, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. मेजॉरिटी ऑफ द मेटालिक सब्सटेंसेज यूज्ड प्रेजेंटली are in the form of alloys, and the main intention behind this is what? To decrease the intensity of corrosion of metals. Obviously हम क्यों कर रहे हैं सब प्रोसेस, बिकॉज ऑफ टू डिक्रीज द इंटेंशन ऑफ करोजन को रोकना है, इसीलिए. अ होमोजेनियस मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ मेटल विथ अदर मेटल और नॉन मेटल इन अ सर्टन प्रपोर्शन इज कॉल्ड एन एलॉय. एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म्ड होता है बाय मिक्सिंग अ मेटल विथ अदर मेटल. मेटल को मेटल के साथ मिक्स करके और मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स करके इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रपोर्शन. उसका कुछ रेशियो लेना पड़ता है. येस. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एलॉय. फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम 90% of copper and 10% of tin. Okay. So bronze statues do not get affected by sun and rain. ब्रॉन्ज के जो स्टैचूज होते हैं वो सन से और रेन से अफेक्ट नहीं होते. स्टेनलेस स्टील डज नॉट गेट स्टेन विथ एयर और वाटर एंड ऑल्सो डज नॉट रस्ट. स्टेनलेस स्टील का भी ऐसा ही है. इट इज़ एन alloy which is made up of 70%, 74% of iron and 18% of chromium and 8% of carbon. देखो कितना सब मिल के उसमें भरा है. So in the recent time what happens, various types of alloys are used for minting the coins. ठीक है, यहाँ पे देखो coins made from various alloys. So various types of alloys which are used for minting coins. Okay, so these are the methods from which we can stop the corrosion. Okay, because अगर corrosion हो गया तो पूरा metal जो है वो ख़राब हो जाता है. आपने देखा होगा. Yes, it will really get damaged and it is not at all used for the further housework. So for that we have to stop it. Okay. Yes. So students, this what we have learned in our today's class, that is corrosion of metals, and we have seen how to prevent the corrosion by different method, that is galvanizing, tining, anodization, then what, electroplating and alloying. Okay. So do watch all the tutorial videos and study hard. Thank you.